Hello students, hi friends, this is KD sir once again from KDCVAM channel. I hope आप लोग मेरे बहुत सारे वीडियोस वॉच कर रहे हैं and thank you very much for 1000 subscribers, right? Those who have done it and जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक प्लीज सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल KDCVAM को, right? तो टुडे वी आर गोइंग टू ऐड अनदर वीडियो टू द इंडियन एविडेंस एक्ट सीरीज और आज का वीडियो का टाइटल है स्टेटमेंट बाय अ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, राइट। अब ये एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक्चुअली एक केस लॉ है। क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक जगह ट्रैवल करते होते हैं, तो बातों बातों में हस्बैंड कहता है कि जो पैसे मैंने एक जो लेडी को दिया था उन्होंने आउट ऑफ स्टेट जो रहते हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है पैसे वापस करने के लिए, तो मैं कल वहाँ जा रहा हूँ। तो दिस वाज द स्टेटमेंट, जस्ट इट वाज ए यूजुअल स्टेटमेंट, दोनों जैसे बात करते हैं वैसे। और वैसे ही दूसरे दिन हस्बैंड जो है आउट ऑफ स्टेट जाते हैं। आउट ऑफ स्टेट उस लेडी के पास पैसे लेने के लिए जाते हैं और उसके बाद वो वापस नहीं आते। अब वाइफ बहुत टेंशन में। अब वाइफ ने उनको ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं मिले नहीं। अब फिर उसके बाद पता चला कि उनके हस्बैंड का मर्डर हो गया। उनके हस्बैंड के बॉडी को काट के एक जगह फेंक दिया जाता है और वो जब बॉडी मिलती है और जाके ये आइडेंटिफाई करते हैं हाँ ये मेरा हस्बैंड है, तब ये केस चालू होता है। अब तब वाइफ जो है वो पुलिस को बयान देती है और जज को मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हैं कि वो जाने से पहले दिन मेरे साथ बात कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया था कि मैं इस लेडी के पास जा रहा हूँ। सी यर देयर इज नो विटनेस, देयर इज नो लाइव विटनेस। जिन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो तो अब मर गया है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट जो है उसको बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन लाइक, और या तो फिर वो कैजुअल भले हो लेकिन वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ऐसे तो कोई विटनेस या तो कोई प्रूफ मिल नहीं रहा है। अब ऐसे टाइम पे इंडियन एविडेंस एक्ट में दिस स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्सन becomes relevant, right? और ये चीज सेक्शन 32 और 33 में इंक्लूड किया गया है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, today's topic is about statement by a person who cannot be called as witnesses. So let's start. Section 32(1) says that, and the subsequent section 33(2) of Indian Evidence Act 1872, they deal with the relevancy of statements given by persons who cannot be called as witnesses, as I just explained in the example, right? Now, who cannot be called as witnesses? There is a particular class of people who cannot be called as witnesses under section 32, and the statements are still allowed to be proved in their absence. Now, the list of persons are as follows. Subsection 1, the person who are dead, person who cannot be found, person who have become incapable of giving evidence, person whose attendance cannot be produced without an amount of delay or expense. तो इन लोगों का स्टेटमेंट एज ए रेलिवेंट माना जाएगा, राइट। एक्सप्लेनेशन: केस इन विच द स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैनॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रेलिवेंट स्टेटमेंट, written or verbal or relevant facts made by a person who is dead or either who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, which under the circumstances of this case appears to the court unreasonable, but they are still themselves actually become facts in the many circumstances. Though Section 60 of the Indian Evidence Act 1872(3) insists that oral evidence must in all cases whatever be डायरेक्ट, राइट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ओरल एविडेंस हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होता है, लेकिन कुछ केसेस में इस तरह के एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे मैंने हस्बैंड और वाइफ का एग्जांपल दिया, तब उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है इफ यू वांट टू सॉल्व द केस, राइट। तो इन अदर वर्ड्स हियरसे एविडेंस, व्हाट इज ए कही सुनी बातें बोलते हैं ना, तो हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस जनरली, बट अंडर सेक्शन 32 hearsay evidence is admissible, so it can be said that it is an exception to the section 60. Now, let's start with section 32. Statements written or verbal of relevant facts made by a person who is dead
or who cannot be found, or who has become incapable of giving evidence, or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, which under circumstances of the case appears to be the court unreasonable as themselves relevant fact, they found in the following cases. Now we will discuss one by one. जो हम लोगों ने सुना, when it relates to cause of death, this is called dying declaration. When the statement is made by a person as to cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in cases in which the cause of that person's death comes into question, such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of death comes into question, or is made in course of business. नॉर्मल बिजनेस में जैसे रूटीनली कोई अगर कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, वो उनको एक डायरी लिखने की आदत है और वो अपने नॉर्मल रूटीन बिजनेस रूटीन में उन्होंने एक जगह पे अपनी डायरी में एक सेंटेंस या तो फिर उनके अकाउंट्स बुक में एक एंट्री लगाई उन्होंने कि मिस्टर ए को मैंने 5 लाख रुपीस दिया हुआ है, और फिर उसके बाद थोड़े महीनों के बाद वो जो बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है। अब बिजनेस जो पैसे दिए हैं वो देने से मना कर रहे हैं, तब ये जो एंट्री है, जो नॉर्मल और कैजुअल एंट्री और रूटीन एंट्री जो बोलते हैं, वो एंट्री बन जाता है रेलेवेंट फैक्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। थर्ड वन, or against interest of maker. When the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, or when if true it will expose him or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit for damages, right? कुछ ऐसा बोला गया है जो उनके खिलाफ ही हो जाता है, that is called against the interest of maker. Next is or gives opinion as to public right, custom और matters of general interest. Now यहाँ पे कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि एक कस्टम के थ्रू फॉलो होते हैं और वो कभी केस या ट्रायल में ज़रूर पड़ता है, लेकिन उस वक्त अगर कोई पर्सन, कोई बुजुर्ग या तो कोई सेम कम्युनिटी या तो ग्रुप का अगर पर्सन आके अपना ओपिनियन या अपना स्टेटमेंट दे तो दैट विल बिकम रेलेवेंट. So when the statement given by the opinion of any such person acts to the existence of any public right or custom or matter of public or general interest of the existence of which, if it existed, he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter has arisen. Next is or relates to existence of relation. That's another thing, right? दोनों के बीच में जो relationship का है, right? When the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between person as to whose relationship by blood, marriage or adoption the person making the statement has special means of knowledge, and when the statement was made before the question is dispute was raised, right? तो जब ये डिस्प्यूट में नहीं था, ये जो क्वेश्चन डिस्प्यूट में नहीं था और तब वो पर्सन ने अपने नॉर्मल या कुछ भी बातों पे स्टेटमेंट दिया हो, वो स्टेटमेंट बन जाता है रेलेवेंट. That is or is made in will or deed relating about the family affairs. When the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between persons deceased and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belonged, or in any family pedigree or upon the tombstone, family portrait or other thing on which such statements are usually made, and when such statement was made before the question in dispute was raised. All these things were done before it happened. Let me tell you, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था, खून होने से पहले हस्बैंड और वाइफ की बात है, तो all these things are related or happen, become cause before it happens, right? So or in document relating to the transaction mentioned in section 13 clause, when the statement is contained in any deed, will or other document which relates to any such transaction as is mentioned in section 13 clause. Now let's see illustrations explaining all this happening, right? ये जो exceptional cases है, जो relevant facts देखें, वो उसके illustration देखते हैं. Number A, the question is whether A was murdered by B or not. Now A dies of injuries received in a transaction in the course of which she was ravished,
द क्वेश्चन इज वेदर शी वॉज रेविस्ड बाय बी और नॉट। अगर वो लड़की अपने डेथ के पहले या तो अपने मरने से पहले अगर वो कुछ स्टेटमेंट बोल देती है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, that becomes a relevant statement. The statements made by A as to the cause of his or her death, referring respectively to the murder, the rape and the actionable wrong under consideration becomes relevant fact, right? Now the question is to the date of A's birth. अब एक बेबी बॉर्न हुई है बराबर, लेकिन अब उस बच्ची जो है बड़ी हो गई है, लेकिन अभी उसके डेट ऑफ बर्थ का एक डिस्प्यूट आया है। नाउ जो सर्जन थे जो उन्होंने उस बच्ची का जो उनके बच्ची के मदर का डिलीवरी देखा था या बच्ची का बर्थ जब हुआ था तब वो प्रेजेंट थे, उनकी एक आदत है अपनी डायरी में नोट करने की। उन्होंने जितनी भी डिलीवरी देखी उन्होंने उसको नोट किया हुआ और इस पर्टिकुलर बच्ची का भी उन्होंने नोट करके रखा था। अब ये बन जाता है रेलेवेंट फैक्ट। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज इन चित्तगोंग और ए गिवन डे। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इसके पहले भी वीडियो में, राइट? तो प्लेस और टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये प्लेस और टाइम तब रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है अगर आप कुछ ऐसा एविडेंस दिए जो वहाँ पे ऑथोराइज्ड हो या तो कुछ ऐसा कुछ प्रूफ बन जाए, राइट? तो ये जो पर्सन जो है चित्तगोंग में थे और तब उनके सॉलिसिटर उनसे बात करते हैं या मिलते हैं, दैट बिकम्स अ रेलेवेंट फैक्ट, राइट? सो ये भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी प्रूफ हो सकता है जो एक ऑथराइज्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल वो बैंक में उन्होंने या तो कुछ एटीएम से उन्होंने पैसे निकाले हो या कुछ जो बन जाता है उनके लिए रेलेवेंट फैक्ट। द क्वेश्चन इज वेदर अ शिप सेल्ड फ्रॉम चित्तगोंग harbor on a given day. Now, a letter written by the deceased member of a merchant firm by which she was chartered to their correspondents in London, to him the cargo was consigned. बराबर, अब उन्होंने वो लेटर पे लिखा कि yes, the ship has just sailed on a given day. तो ये जो अगर उन्होंने जो लेटर में लिखना जो that becomes a relevant fact, right? The question is whether rent was paid to A for certain land. अब A को ये जो जब डिस्प्यूट में आता है तब ये बातें आती हैं कि A ने SMS या तो कोई मैसेज या तो किसी को लेटर लिखा था कि यस जस्ट रिसीव दी रेंट ऑफ दैट लैंड। ये नॉर्मल था, लेकिन अब वो जो चीज़ जो है वो जो स्टेटमेंट जो है बन जाता है रेलेवेंट फैक्ट। Now the question is whether A and B were legally married or not. The statement of the deceased clergyman, right, that he married them under such circumstances that the celebration will be a crime, and that becomes relevant. The question is whether a person who cannot be found wrote a letter on the certain day. The fact that a letter written by him or dated on that day becomes relevant. The question is that what was the cause of the wreck of a ship? A protest made by the captain whose attendance cannot be procured is a relevant fact. Now, the question is whether a given road is a public way. तो तब एक deceased headman जो सरपंच हो या कोई गांव के बड़े हैं और वो अपने स्टेटमेंट देते हैं yes this is a public road, that becomes a relevant fact. The question is whether the price of the grain on a certain day in a particular market. The statement normally जो बनिया बोलते हैं या तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने डायरी में या किसी में नोट करते हैं या तो फोन, तो उस दिन का जो उन्होंने भाव नोट करके रखा है that becomes a relevant fact. The question is whether A who is dead was the father of B or not. A statement by A that B was his son is a relevant fact. Now the question is what was the date of the birth of A? A letter from A's deceased father to a friend announcing the birth of A on a given day is a relevant fact. The question is whether and when A and B were married. An entry in a memorandum book by C, the deceased father of B, of his daughter's marriage with A on a given date becomes a relevant fact. A sues B for a libel expressed in a painted caricature exposed in a shop window. The question is as to the similarity of the caricature and its libelous character. The remarks of a crowd of spectators on these points may be proved. Now, section 33. Relevancy of certain evidence for proving in substantial proceeding that the truth of the facts therein stated. Now, evidence given by a witness in a judicial proceeding. राइट, ये ध्यान से सुनना। एक बार किसी ने अगर अपना एविडेंस दिया है या तो स्टेटमेंट दिया है या तो उन्होंने अपने
प्रूफ कुछ प्रोड्यूस किया है, अगर वही रिलेटेड केस और वही पार्टी अगर दूसरी बार अगर वो केस पे आते हैं तो दैट स्टेटमेंट और दैट प्रूफ विल बिकम अ रेलेवेंट फैक्ट. So the evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any person authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of the same judicial proceeding the truth of the facts which it states. When the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way of the adverse party, or if the presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under those circumstances the court considers unreasonable, provided that the proceeding was between the same parties or the representative in interest, that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine, that the question in issue was substantially same in the first as in the second proceeding. So that's the explanation becomes a criminal trial or inquiry shall be deemed to be proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this section. So students and friends, I hope we completed 32 and 33 in which the statements of a person who cannot be taken as witnesses, right? So for end of the justice, so the conclusion is, for end of the justice, the law always demands best evidence to be produced before the court of justice. The best evidence means the evidence of the person who has made a statement or has written a document by himself, and this becomes the best evidence. But the second hand, hearsay evidence means derivative evidence. When the person or document cannot be available in the court, then the other person may be allowed by the court, who is not required to take oath or is put into the cross-examination, to testify the contents of the documents prepared by the person who is not available for reason mentioned in the section 32. Thus, the hearsay evidence is relevant when there is necessary, the special circumstances guaranteeing the genuineness and the trustworthiness, and hence section 32 is an exception to the hearsay rule. So friends, I hope you got it. I hope it was clear for you and this can be very helpful. Keep on watching our video और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो. शेयर इस कदर करो कि सारे जितने भी जो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पहुंचे ये वीडियो. ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब and keep commenting. Bye. Have a nice day. Let's meet in the next video.